Welcome back, guys. अब हम करेंगे turning effect of forces question 14, paper 2. Let's start. Question 14. Figure 1.1 shows a painter standing on a wooden plank directly above the right hand support. Right hand support के ऊपर खड़ा हुआ है. Center of mass will be in the geometrical center. Let's start. The plank has a length, width, and thickness of the values are given. The gravitational field strength G is 10 newtons per kilogram and the mass of the plank is 23 kilograms. The center of mass is in the middle of the plank at a distance of 1.3 meters from each. This will be the distance. This will be the center of mass. Calculate the weight. Weight will be mass into G, which is gravitational field strength. W will be mass है हमारे पास 23, gravitational field strength है 10, will give us weight 230 newtons. Very simple question. The moment of plank about the right hand support. राइट हैंड सपोर्ट पे डिस्टेंस कितना है 1.3 और फोर्स कितना होगा द मास ऑफ द वेट ऑफ द व्हाट डू यू कॉल इट द पेंटर तो विल डू मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स क्या होगा द वेट ऑफ द पेंटर विच इज 230 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फोर्स इधर लग रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे होगा विच इज 1.3 we're gonna take the distance from the pivot to the force so which is gonna be 1.3 we'll get the answer from 230 into 1.3 will be 299 which is 300 newton meters will be the answer. Let's check for once. 300 Newton meters. Yes. अगला वाला भी कर लेते हैं 300 Newton meters. अच्छा. Painter moves further to the right along the plank and the plank rotates about the right hand support. Explain. अच्छा ये वर्कर शोहा हो रहा था और उसने राइट पे चला गया है एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट जब वो राइट पे जाएगा ही विल गेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेन करेगा द मोमेंट विल इंक्रीज because moment is dependent on two things, one being the force, the second being perpendicular distance. So when the perpendicular distance increases then the moment will increase and at this point where he is at मतलब right पे है तो the clockwise moment will exceed the anti-clockwise moment which will result in him falling over. Clockwise moment about support is greater than not equal to different from moment of plank anti-clockwise moment. अच्छा, question 15, a solid rectangular concrete is lying horizontally on flat ground on one of its largest sides पे so that means के इसका center of mass नीचे है और इसका जो surface area which is the highest from any other side. Figure 3.1 shows the dimension of the side, this and this. The block is uniform density है इसकी. The block की uniform density है, which means the mass is uniformly distributed. State the height of the center of mass of block above the ground. This is the height. तो वो पूछ रहा है किस हाइट पे जाके सेंटर ऑफ मास होगी पहले उन्होंने एक बात स्टेट की है द ब्लॉक इज यूनिफॉर्मली डेंस का क्या मतलब होता है द सेंटर ऑफ मास विल बी इन द ज्योमेट्रिकल सेंटर तो अगर ये इसकी हाइट है अगर दिस इज द हाइट सो द सेंटर ऑफ मास विल लाई इन द हाफ वे पॉइंट उन्होंने पहले भी हमें बताया हुआ है कि हाफ वे पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास विल लाई सो 0.13 का हाफ वे पॉइंट क्या होगा 0.65 मीटर्स
0.065 meters. Very simple question. Let's continue. इसका हम आगे देख लेते हैं. इसके two approaches हैं. So that's interesting. The block is rotated about its lower left-hand edge so that it comes to rest on one of its smaller sides. तो ये rotate होके इस तरफ को चला गया, which is making it gain like the height of the center of mass. The center of mass was previously here, अब इधर आ गया center of mass. Explain why work is done as the block is rotated. When the block is rotated, it will the force will act in the same direction as the distance it is traveling, right? So work done का formula क्या होता है? Force into perpendicular distance. So the force is perpendicular to the distance, which means the work is done. Second, ये वाला हो गया. Gravitational potential energy is gained, so work is done. Yeah. So very simple. So that is it for the video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.